Hey guys, I'm back with another video and आज हम बात करेंगे Atelier colognes की and this is from their private line and इसका नाम है Lune Feline, so stay tuned. Winters are here and so are the wedding season and definitely कुछ unique आपको लगना है and you want to stand out of the crowd and if you are fine for paying like 10,000 rupees or something for 100 ml bottle, then this is the thing you should definitely check out. ये actually उनका private line है like I said and इसकी presentation उन्होंने अच्छी niche level की ही रखी है. The box opens like this is the sleeve like you saw. They actually copied the concept of Malveser colognes and उन्होंने भी ऐसे किया था कि yellowish juice रहेगा and it has the real gold flake inside and the cap is really heavy. You can see the bottle design. I was so much fascinated by the bottle and the smell itself that मैंने इसका another order I made and I mean to say I bought another 100 ml bottle of it. So this is the presentation part. Now let's check out the bottle and we'll review the smell itself. So guys, after unboxing, let's come back to the bottle itself. And जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी second bottle है because this is full, almost full. So yeah, if you notice ये अंदर gold flakes है इसके अंदर जो I would suggest एक बार shake well before using it so that जो ये gold के flakes है वो अच्छे से spray के अंदर भी perfume के साथ में निकले. हाँ, it's not like Rose d'Herby from Armani, उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा small particles है, इसके अंदर ऐसा नहीं है. बट एनीवेज ये एक बार शेक कर लोगे तो सो दैट जो नीचे गोल्ड फ्लेक्स जो सेटल हो जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे. बॉटल इज़ क्लासी इटसेल्फ. कैप इज़ वेरी हैवी. इट्स मेटल. आई डोंट नो व्हाई इट रोटेट्स सो इजीली लाइक अ फिजेट स्पिनर. एनीवेज एंड द स्प्रे इटसेल्फ इज़ रियली गुड इफ यू कैन सी. अभी दिखेगा नहीं ज़्यादा सही से बट ऑन कैमरा आई ट्राई टू फोकस बट थोड़ा सा गोल्डन टच आता है स्प्रे करने के बाद में. शुड बी नोटिसेबल ऑन डार्कर क्लोथ्स बट ऑन स्किन एज वेल यू कैन सी कि थोड़ा बहुत तो दिखेगा शाइन. एनीवेज सो coming back to smell, it's really good gourmand scent, really good. I would highly suggest this to wear at special occasions. ये daily wear के लिए अच्छा नहीं है. Even if अगर winter time चल रहा है and you are feeling like यार ठीक है, it's not that good for office wear or daily casual wear. I would highly suggest you to wear it for date nights or dinner dates. You know, कोई upscale events होते हैं like wedding function को attend करना है और something like that, gala nights, उसके लिए it's top notch. It is one of the best gourmand scent I've ever came across and इनकी ये जो प्रीवियस लाइन है Atelier colognes की, so उसके अंदर सबसे टॉप सेलर यही है. दूसरे भी हैं actually, I haven't tried all of them but दो तीन जिसमें से मैंने ट्राई किया तो उसमें से मुझे ये Lune Feline सबसे बेस्ट लगा था. दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस वन. एंड इसके लिए आप अगर इन केस चेक करते हैं फ्रेगरेंटिका पे तो लव भी बहुत मिला है इसको. सो इट्स मोस्ट लव्ड अमंग द लाइन. रिगार्डिंग स्मेल मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा गोurmandish है. लाइक आई सेड बिफोर, वनीला हैवी है. एक बार किसी को आप बोलोगे कि किस टाइप का है तो एक लेमन टर्म्स में वो बोलेगा कि आप थोड़ा चॉकलेटी टाइप फ्रेग्रेंस आ रही है बिकॉज ये वनीला हैवी है. बट इट्स नॉट हैविंग दैट कोको सॉर्ट ऑफ वाइब्स, सो डोंट गेट इट रॉन्ग के चॉकलेट टाइप की है. वनीला बेस्ड चॉकलेट आई एम टॉकिंग अबाउट. एनीवेज यू कैन से दैट इट्स लाइक मोर ऑफ अ डेजर्ट, कुछ स्वीट डिश टाइप नहीं होती बेकरी वाला उस टाइप का. बट ऐसा भी नहीं है टोटली
कि ये लगाया और यू फील लाइक कि यार क्या बेकरी का प्रोडक्ट कोई चल के आ रहा है, इस टाइप का भी नहीं लगता. It's very classy. You have to experience it. I would highly suggest you to at least sample it out because see, इसकी bottle इतनी अच्छी है, packaging is good and fragrance is too good. So I don't think it's not a blind buy worthy fragrance. It's totally a best bet. If you can afford it, then I'd highly suggest to go for this because ये इसका आज तक मैंने कोई क्लोन भी नहीं देखा and इसके सिमिलर मैंने फ्रेग्रेंस भी आज तक अभी तक तो एनकाउंटर नहीं की. सो फार आई एम ट्राइंग कि कुछ सिमिलर अगर मिल जाता विच इज़ ऑन बजट सो दैट आई कैन यू वेयर इट मोर ऑफन बिकॉज दिस थिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. दिस इज़ अ नीश फ्रेग्रेंस सो यू कैन वेयर इट सो क्वाइट ऑफन. You got the point what I mean to say. In case आपको ये वीडियो पसंद आया then please hit a like button and if you're new to the channel then please subscribe. Stay tuned. I'll be bringing out some more interesting reviews and informative videos. So till then, catch you later. Bye.